Hello everyone. Today again we are going to learn some daily use sentences. Okay, these are very useful or very important and we can use it in our daily life. Okay. So just cram these sentences and use it in your daily life. Okay. So let's get started. ये बच्चे मेरे हैं. These are my children. Okay. ये बच्चे मेरे हैं. These are my children. These are my children. These are my children. Okay. यह तुम्हारा नहीं है. This is not yours. This is not yours. This is not yours. ये मेरी बिल्ली है. This is my cat. This is my cat. This is my cat. Okay. ये बिल्ली मेरी. This cat is mine. This cat is mine. Okay, this cat is mine. ये राम की किताब है. This is Ram's book. This is Ram's book. Okay. राम की किताब, Ram's book. Okay. Ram apostrophe and then S. Okay, apostrophe S. So ऐसे हम कह सकते हैं राम का या फिर राम की बुक. ओके. श्याम की बुक, श्याम्स बुक. राजन की बुक, राजन्स बुक. ओके. apostrophe S के साथ हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर वन. ये किताब राम की है. दिस बुक is Ram's. Okay. This book is Ram's. राम की किताब. Okay. This book is of Ram. We can say this book is of Ram. Is of, or we can say this book belongs to Ram. Okay. So let's learn any one of these. Okay. So this book is of Ram. Now let's move on another one. हम तुम्हारे हैं. We are yours. We are yours. We are yours. हम तुम्हारे हैं. We are yours. मैं हर पल तुम्हारे साथ था. I was there with you every moment. I was there with you every moment. I was there with you. I was there with you every moment. Okay. Now, गाड़ी में कितना पेट्रोल है? How much petrol is there in the car? How much petrol? How much petrol? How much petrol is there in the car? In the car. How much petrol is there in the car? Or we can say, how much petrol does the car have? How much petrol does the car have? Okay. तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? How much money do you have? Okay. How much money do you have? 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 किस शहर में हो तुम इस वक्त? ओके. किस शहर में हो तुम इस वक्त? Which city? Which city are you in right now? Which city? Which city are you in? किस शहर में हो? Which city are you in right now? इस वक्त. Right now.
Which city are you in right now? Okay, which city are you in right now? We are asking questions, so question. Now let's move on. राम मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ. I am alive only for you. I am alive only for you. Okay. I am alive only for you. I'm alive only for you. I'm alive only for you. Okay. I am alive only for you. Okay. राम कहीं खोया हुआ था. Ram was lost somewhere. Ram was lost somewhere. Ram was lost somewhere. Okay. Ram was lost somewhere. मैं तुम्हारे सपने में खोया हुआ हूँ. I am lost in your dreams. मैं तुम्हारे सपने में खोया हुआ हूँ. I am lost. I am lost in your. I'm lost in your dreams. I'm lost in your dreams. Okay. मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है. मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है. किसी को आपको कहना है मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, तो आप कह सकते हो मोबाइल इज kept on the table. Okay. Mobile is kept on the table. Mobile is kept on the table. Okay. Bed पर रखा हुआ है. On the bed. Okay. Mobile is kept on the bed. That's all. So this is how you can practice and you can use it. So मैं डरा हुआ था. I was scared. मैं डरा हुआ था. I was scared. I was scared. यदि प्रेजेंट में डरा हुआ तो मैं बोला I am scared. Okay. I am scared. या फिर if I'm talking about past, then I will say I was scared. Okay. I would say I was scared. Or I was horrified. Okay. The next word is horrified. Horrified. I was horrified. Or petrified. I was petrified. I was horrified. Petrified. Okay. I was terrified. डरा होने के लिए हम इन सब वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. Scared, horrified, terrified, okay, petrified. These all words have same meaning. Okay, so we can use it. Okay, now let's move on another one. कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? How many children are here at this time? How many children are here at this time? How many children are here at this time? At this time. How many children are here at this time? Or we can say how many children are here right now? Okay. At this time? Right now. Okay. Both are same meaning. Now, Ram 2 बजे जगा हुआ था. Ram was awake at 2. Ram was awake. Ram was awake at 2. जगा होने को बोलते हैं awake. Okay, awake. Awake. Ram was awake at 2. Okay. राम 2 बजे से जगा हुआ था. राम 2 बजे से जगा हुआ था. 2 बजे से. Okay. From a point of time. So we can say Ram had been
Ram had been, okay, Ram had been awake. जगह होने को बोलते हैं awake since. Ram had been awake, had been awake since. तो इस जगह होता since to. कैसे point of time से कह सकते हैं since to. Okay. Ram had been awake since to. राम 2 बजे से जगा हुआ था in past. Okay. So Ram had been awake since 2. उसके पापा पिए हुए थे. Okay. उसके पापा ने दारू पिया थी. So we can say his father was, okay, drunk. किया होना drunk. Okay, टूटा होना broken. थका होना tired. Okay. His father was drunk. पिए हुए थे. Okay. Drunk. Drunk का बोलते हैं ये ना third form of the verb drink. Now तुम मेरे करीबी दोस्त हो. You are my close friend. You are my close friend. Okay. Close. Close friend. This word is pronounced as close. Okay. As well as close. Okay. क्लोज का बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को बंद करने की बात करें. ठीक है. क्लोज द डोर. बंद करने की बात करें तो क्लोज द डोर. ओके. यदि हम खास की बात करें, ओके, खास दोस्त है, करीब दोस्त है, करीबी दोस्त है, तो वी कैन से क्लोज फ्रेंड, नॉट क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड. ओके. सो लर्न दिस extra information. Okay. If you want, you can learn it. Okay. Now let's move on another one. Okay. ये लिखा हुआ था. लिखा होना written. It was written. ये लिखा हुआ it was written. ये लिखा हुआ है इन प्रेजेंट, तो वी कैन से इट इज रिटन. ओके. ये लिखा हुआ होगा इट विल बी रिटन. ओके. इट विल बी रिटन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द अनदर वन. ये गीता में लिखा हुआ है. ये गीता में लिखा हुआ है. ओके. इट इज रिटन इन भगवत गीता. भगवत Gita. It is written in the Bhagavad Gita. It is written. लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ है? In the Bhagavad Gita. Okay. Gita. It is written in Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita. Okay. We will use the because this is a famous. फेमस. भिखारी के कपड़े फटे हुए थे. द बेगर्स क्लोथ्स वर टॉर्न. भिखारी के कपड़े फटे हुए थे. द बेगर. ओके. बेगर्स. भिखारी की बेगर्स. भिखारी का बेगर्स. ओके. ऑफर्स ऑफ फेयर. बेगर्स क्लोथ्स फटे हुए थे. फॉर torn. Beggars' clothes were torn. The beggars' clothes were torn. T-O-R-N, torn. फटा होना torn. Tear की third form है. Okay. So torn. क्या तुम्हारे पास कुछ था? क्या तुम्हारे पास कुछ था? Did you have something? Did you have something? Did you have something? Did you have something? क्या तुम्हारे पास कुछ था? Did you have something? हमारे पास कुछ है.
हमारे पास कुछ है, वी हैव समथिंग, वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ है। अगर बोलना हमारे पास था इन पास, सो वी कैन से वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ था। ओके, मैं किसके लिए वहाँ था? फॉर whom was I there? For whom was I there? Was I? For whom was I there? Or we can say, whom was I there for? Whom was I there for? Whom? Okay, whom was I there for? Was I there for? Okay, there. whom was I there for? Okay, इस for को उठाकर हम लास्ट में लेके जाते हैं ताकि दिस सेंटेंस साउंड करे। Okay, this sentence sounds like a good sentence. Okay, so often we say whom was I there for? हम preposition को last में at the end of the sentence we use preposition. Okay, in these type of sentences. मैं किसके लिए वहाँ था? Okay, whom was I there for? Okay, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है। He is waiting for you. 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 तुम घर के अंदर थे। You are inside the room or house. Okay, तुम कमरे के अंदर थे। You are inside the room. You were inside the घर के अंदर, inside the house. Okay, or inside कमरे के अंदर, inside the room. Okay, just now let's move on. राम मेरे बगल में खड़ा था। राम was standing beside me. Ram was standing beside me. Ram was standing beside. Ram was standing beside me. Or Ram was standing next to me. बगल में खड़ा था। Ram was standing next to me. Okay. So शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है। The worship of Lord Shiva is famous here. The worship of Lord Shiva. Okay, the worship of Lord Shiva is famous here. The worship of Lord Shiva is famous here. Okay, the worship of Lord Shiva is famous here. So let me speak out all the Hindi sentences. Okay, so that you will practice your translation और इसको करो। ये बच्चे मेरे हैं, यह तुम्हारा नहीं है। ये मेरी बिल्ली है, ये बिल्ली मेरी है। ये राम की किताब है, ये किताब राम की है। हम तुम्हारे हैं, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। ओके, गाड़ी में कितना पेट्रोल है? तुम्हारे पास कितना पैसा है? तो किस शहर में हो तुम इस वक्त? किस शहर में हो तुम इस वक्त? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। राम कहीं खोया हुआ था, मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ हूँ। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, मैं डरा हुआ था। कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं? राम 2 बजे जगा हुआ था। राम 2 बजे से जगा हुआ था। ओके, उसके पापा पिए हुए थे। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, ये लिखा हुआ था। ये गीता में लिखा हुआ है। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे। क्या तुम्हारे पास कुछ था? हमारे पास कुछ है। मैं किसके लिए वहाँ था? वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है। तुम घर के अंदर थे। राम मेरे बगल में खड़ा है।
शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है. That's all for this video. Keep learning and keep getting better. I will get back to you soon.